श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखंडे अथ द्वितीयो अध्याय। ब्रह्मोवाच तदाकर्ण्य महादेवो योगज्ञानविशारदा त्यक्तकामो न तत्याज संभोग पार्वती भयात् आजगाम गृहद्वारी सुराणां निकटं शिवा दैत्येन पीडितानां च शङ्करो भक्तवत्सला दिवा सर्वे प्रभुं दृष्ट्वा हरिणा च मया शिवं बभूवो सुखिन् क्षाति तदा वै भक्तवत्सलम् इत्याकर्ण्यवचस्तेषां सुराणां भगवान् भवा प्रत्युवाच विष्णन्नात्मा दूयमानेन चेतसा प्रणम्य सुं महाप्रीत्या नतस्कन्धाक्ष निर्जरा तुष्टुभु शङ्करं सर्वे मया च हरिणा मुने दिवा ऊचु देवदेव महादेव करुणसागर प्रभो अन्तर्यामी हि सर्वेषां सर्वं जानासि शङ्कर देवकार्यं कुरु विभो रक्ष देवान् महेश्वर जहि दैत्यान् कृपां कृत्वा तारकादीन् महाप्रभो शिवोवाच हे विष्णु हे विधुर्देवा सर्वेषां वो मनोगति यदा वितदवत्येव कोऽपि नोतनिवारका यज्जातं तजात्मेव प्रस्तुतं शृणुतामरा शिरस्तस्खलितं वीर्यं को गृह्ष्यति मेधुना स गृहायादिति प्रोच्य पातयामास्तदूर्भिः अग्निभूत्वा कपोतो हि प्रेरिता सर्वनिर्जरे अभक्षच्छाम्भवं वीर्यं चञ्चवातु निखिलं तदा एतस्मिन्नन्तरे तत्रा जगाम गिरिजामुने शिवागमवल्लम्ब विलम्बे च ददर्श सुरपङ्गवान् ज्ञात्वा तद्घृतमखिलं महाक्रोधयुता शिवा उवाच त्रिदशान् सर्वान् हरिप्रभृतिकांस्तदा देवीवाच रे सुरगणा सर्वे यूयं दृष्टा विशेषता सर्वात् संसाधका नित्यं तदर्थं परदुःखदा स्वार्थहेतोर्महेशान् माराधय परं प्रभुं नष्टं चक्रुमर्दिहारं वन्ध्या भवमहं सुरा मा विरोधय सुखं नैव केशाचिदपि निर्जरा तस्माद् दुःखं भवेदो हि दुष्टानापि दिवोक्कसाम् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विष्णु प्रमुखान् सुरान् सर्वान् शशाप सा प्रज्वलन्ती प्रकोपेन शैलाराजसुता शिवा पार्वती उवाच अद्य प्रभृति देवानां वन्द्या भार्या भवन्ति देवाक्ष दुःखिता सन्तु निखिला मदिरोधिना ब्रह्मवाच इति शप्त्वाखिलान् देवान् विष्णुवाद्यान् सकलेश्वरी उवाच पावकं क्रुद्रा भष्यकं शिवरेतसा पार्वती उवाच सर्वभक्षी भव शुचे पीडितात्मेति नित्यशा शिवतत्त्वं न जानासि मूर्खोऽसि सुरकार्यकृत् रे षट्महाधुष्ट दुष्टानादुष्बोधवान् भक्षशीववीर्यं यनाकाशीदुचितं हितं ब्रह्मवाच इति शप्त्वा शिवावहिंसेहेशयन् डगात्मजा जगाम स्वालयं शीघ्रं सन्तुष्टा ततो मुने गत्वा शिवा शिवं सम्यक् बोधयामास यत्नता अजीजनत्परं पुत्रं गणेशाख्यं मुनीश्वरा तदृतान्तमशेषं च वर्णशिष्यमुनिर्कृत इदानीं शृणु सुप्रीत्या गृहोत्पत्तिं वदामयं पावका तीर्थमन्नादि भुञ्जते निर्जरा खलु वेदवानेति सर्वे ते सगर्भा अभवन् सुरा ततो सहन्तस्तवीर्यं पीडिताः भवन् सुरा विष्णुवाद्या निखिलाशाति शिवाद्या नष्टबुद्धया अथ विष्णुप्रभृतिका सर्वे देवा विमोहिता
गृहामानाययु शीघ्रं शरणं पार्वतीपते। शिवालयस्य ते द्वारि गत्वा सर्वे विनम्रका तुष्टवु स शिवां शम्भु प्रीत्या साञ्जलये सुरा। देवाऊचु देवदेव महादेव गिरिजेश महाप्रभो किं जातं धुनानाथ तव माया दुरत्यया। सगर्भाक्ष वयं जाता दहामानाक्षरेतसा तव शम्भो कुरुं कृपा निवार्य दशामिमां। ब्रह्मवाच इत्याकर्णयात् मर्नुतिं परमेश शिवापति आजगाम द्रुतं द्वारि यत्र देवा स्थिता मुने। अगत्तं शङ्करं द्वारि सर्वे देवाक्षाच्युता प्रणम्य तुष्टुः प्रीत्या नत्का भक्तवत्सलं। दिवौचु शम्भो शिवमहेशान त्वां नता संविशेषता रक्षणा शरणाप्नान द्वामानाक्षरेतसा। इदं दुःखं हरर भवामो हि मृता ध्रुवं त्वां विना कसमार्थोऽद्य देवदुःखनिवारणे। इति दीनतरं वाक्या माकर्ण्य सुरराट् प्रभु प्रत्युवाच विहस्याथ स सुरान् भक्तवत्सला। शिववाच हे हरे हे विधे देवा सर्वे शृण्वन्मद्वचा भविष्यति सुखं बोध्य सावधाना भवन्तु हि। एतद्वन्मद्वीर्यं धृतमेवाखिलासुरा सुखिनस्तद्विशेषेण शासनामं सुप्रभो। ब्रह्मवाच इत्याज्ञां शिरसास्थाय विष्णवाद्या सकलासुरा अकाशुर्वर्मणं शीघ्रं समर्रन्तं शिवमव्ययं तच्छम्भुरेत सर्वानभं पर्वताकारं दुत्तम। अभवत्पतितं भूमौ सप्रदष्ट्यामैव सुप्रभम् अभवन् सुखिनं सर्वे सुरा सर्वे च युक्तायत्रय अस्तुवन् परमेशानं शङ्करं भक्तवत्सलं पावकसत्त्वभवनेव सुखी तत्र मुनीश्वर। तस्याज्ञां परमोद्वादे शङ्कर परमेश्वर तथा स बहिर्वित्तला साञ्जलिर्नर्तको मुने। अस्तो शिवं सुखीनात्मा वचनं चेदं ब्रवीत्। अग्निरुवाच देवदेव महेशानं मूढोऽहं तव सेवका क्षमस्व मे पराधं हि मम दाहं निवारये। त्वं दीनवत्सला स्वामिन् शङ्कर परमेश्वर प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पावकं दीनवत्सला। ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्यशुचेर्वाणी स शम्भो परमेश्वरा प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पावकं दीनवत्सला। शिववाच कृतं त्वनुचितं कर्म मद्रितो भक्षितं हि तत् अतो निर्वर्तस्तेदाह पापाधिकया नम्दाघया। इदानीं त्वं सुखी नाम शुचे मच्छरन्नागता अतः प्रसन्नो जातोऽहं सर्वं दुःखं विनश्यति। कस्यचित् सुसित्प्रियो यो नो तद्वेत्सत्यज्यत्नता भविष्यसि सुखी त्वं हि निर्दहात्मा विशेषता। ब्रह्मवाच शम्भुवाक्यं निशम्येति प्रत्युवाच शनैशुचि साञ्जलिर्नर्तका प्रीत्या शङ्करं भक्तशङ्करं दुरासदमिदं तेज सत्त्वनाथमहेश्वर। काञ्चिनास्ति विना शक्त्या धर्तु यो नो जगत्त्रये। इत्थं यदा ब्रवीद्भिस्तदा त्वं मुनिसतं शङ्कर प्रेरिता प्रार्थत् हृदा अग्निमुपकारका। नारदवाच शृणु मद्वचनं वह्ने त्वं दाहरं शुभं परमानन्दं रमयं सर्वकष्टनिवारकं कृत्वोपायमिमं वहे सुखी भवविदाहका। शिवेच्छया मया सम्यग् गुप्तं तातेदमादरात्
तपोमासन्नान्पत्र्य स्त्रियो यास्यु रगेषु चेतदेहेषु स्थापय त्वं शिवरेतस्ते वदं महत्। ब्रह्मवाच तस्मिन् वत्सरे तत्रागता सप्तमुनिस्त्रिय तपोमासी स्नान् कामा प्रातः संयमा मुने स्नानं कृत्वा स्त्रियस्ता हि महाशीतार्दिताक्षषट् गन्तुकामा मुने याता वह्निज्वाला समीपता विमोहिताक्ष त्वादृष्ट्वा रुन्धती गिरिशागया निशिषेद विशेषेण सुचरित्रा सुबोधिनी तत्ता षड्मुनिस्त्रियो मोहात् तथा तत्र गता मुने स्वशीतविनिर्वृत्यर्थ मोहिता शिवमायया तद्रेतकनिका सद्यस्तद्येहान् विविशुर्मुने रोमद्वाराखिलावहिर्हृद्याः विवर्जिता अन्तर्धाय द्रुतं बहिर्ज्वालारूपो जगामः सुखी स्वलोकं मनसा स्मरसत्वां शङ्करं च तं सद्भास्ता स्त्रिय साधो भग्नदाः प्रपीडिता जग्मुस्वभवनं तातारुन्धती दुःखिता गिना दृष्ट्वा स्वस्त्रीगतिं तात नाथा क्रोधाकुलादृतं तत्युज्यजुस्तास्त्रियस्तात् सुस्मन्मन्त्र्य परस्परम् अथ ता षट्स्त्रिया सर्वा दृष्ट्वा स्वय विचारकं महादुःखान्वितास्ताता भग्ना कुलमानसा तत्यजु शिवरेतस्तदर्भरूपं मुनिस्त्रिय ता हिमाचलपृष्ठेथा भवन्दाह विवर्जिता असह्नं शिवरेतस्तदिम्रादिकं पमुद्वहन् गङ्गाया प्रक्षिपत्तूर्णमसंदा पीडिता गङ्गयापि च दग्धीर्य दुस्सहं परमात्मना निक्षिप्तं हि शरस्तम्भे तरङ्गे सर्वैर्मुनीश्वरा पतितं तत्र तद्रेतो द्रुतं बालो बभूवः सुन्दरा सुभगा श्रीमास्तेजस्वी प्रीतिवर्धना मार्गमासे सिते पक्षे तिथोषश्चा मुनीश्वरा प्रादुर्भावो भवत्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले तस्मिन् वत्सरे ब्रह्मान् कस्माद्विंशैलजा अभूतां सुखिनो तत्र स्वगिरो गिरिशोऽपि च शिवाकुच्चाम्भया शुश्रापयानन्दसम्भवं तत्र गत्वा च सर्वेषां सुखमांसि मुनेऽधिकं मङ्गल चाभवत्तात त्रिलोक्यां सुखदं सतां फलानामभविदेभ्यनो दैत्याना च विशेषता अक्समादभवद्योऽस्मिन् परमो दुन्दुभिध्वनि पुष्पवृष्टिपपाताशु बालकोपरि नारदा विष्णुवादीना स्मस्ताना देवानां मुनिसतम् अभूदकस्मात् परम् आनंद परमोत्सव इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां चतुर्थे कुमारखंडे शिवपुत्र जननन वर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः।